Now moving to second question. Second question में है कमला borrowed a sum of rupees 26,400. कमला ने बोरो किए हैं प्रिंसिपल, जो भी बोरो किए हुए अमाउंट है उसको हम प्रिंसिपल कहेंगे. So principal it is 26,400 rupees from a bank to buy a scooter. तो उसने बैंक में से कुछ पैसे लिए स्कूटर परचेस करने के लिए. आगे दिया है एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम. तो आर इज इक्वल्स टू 15% पर एनम है, पर एनम. देन कंपाउंडेड ईयरली, मतलब कंपाउंडेड ईयरली मींस k इज इक्वल्स टू व्हाट आई कैन टेक 1. k is equals to 1 and what amount will C pay means we have to find A, what amount C will pay at the end of 2 years and 4th month to clear the loan. The time period it is 2 year and 4 months. So इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता है, बाकी सबसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें खाली देखना क्या होता है टाइम पीरियड. अब टाइम पीरियड यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 ईयर एंड 4 मंथ्स. अब 2 ईयर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 मंथ से प्रॉब्लम है. क्यों? अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो a इज इक्वल्स टू p इन द ब्रैकेट 1 प्लस r बाई 100 रेस्ट टू t, और यहाँ पे k लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज k इज इक्वल्स टू 1 कंपाउंडेड एनुअली है. हियर t की वैल्यू है वो यहाँ पे फ्रैक्शन में आएगी और फ्रैक्शन फिर से फाइंड करना पड़ेगा. तो बेटर ऑप्शन है, हम क्या करेंगे होल वाला पार्ट अलग से कर लेते हैं, मतलब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब 2 ईयर का हम एंड कर देते हैं तब फाइंड करने के लिए. तो t इज इक्वल्स टू पहले होल नंबर लेना पड़ेगा, वही क्या हो जाएगा p1 भी बोल सकते हो, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर. सो वैल्यू पुट कर दो p मतलब क्या लिख सकते हो 26,400, 1 प्लस r मतलब हमारे पास 15 है अपॉन 100 रेस्ट टू t टाइम पीरियड. अब हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा. सो 26,400 into I can write 115 upon 100 into 115 upon 100. Why? LCM. This 0 cancel out. Now 23 5s are 115, 20 5s are 100. So again 10 2s are 20 and sorry 4 5s are 20 I am writing. So 5 4 se if I am dividing 4 6 are 24, so again 66 I can write 66 into 23 and 5 23s are, so here it will be 23. 66 into 23 का square that is 529, 23 का square that is 529. So 529 into 66 I am doing, then 6 9s are 54, 5 carry over, 6 2s are 12 plus 5 17, 1 carry over 31. So again 3 1 7 4 4 1 and sorry 9 and 4 34,914 rupees. This would be amount at the end of second year, and amount means principal for the next year. Now SI for third year would be CI. SI for third year is would be CI, but we are what we have to find P1 RT upon that 100. That formula I have to return. P1 here I cannot take P this. I have to write this P 34,914 into R. R here it is 15% and time period it is 4 months only remaining. So 4 month means I am converting it into year, so divide by 12. 4 3s are 12, 3 5s are 15, 5 20s are 100. Now 10 2s are 20, so 17. Yeah, here 4 2s are 8, 5 and 7. So 1745.7, or we can say 70 rupees. This would be a SI or SI for the third year. Now amount is equals to, I can write P1 plus SI. P1 plus SI means P1 I can write 341914 plus SI 1745.70. Now if I am adding this
terms, then I will get 36,659.70 rupees. This would be our amount A. So हमें अमाउंट ही पूछा गया था कि भाई कमला को कितने पैसे वापस करने चाहिए, तो दिस इज अ अमाउंट. सो at last we can write the statement that Kamla has to repay 36,659.70 rupees at the end of 2 year and 4 month. Now moving to third question. Third question is that Fabina borrows rupees 12,500. Fabina ने 12,500 rupees borrow किए हैं, तो 12,500 rupees at the rate of 12% per annum, means R given, that is 12% per annum, and time period it is 3 years, T is equals to 3 years, at simple interest at SI, and Radha borrows the same amount. This is calculation for Fabina, and for Radha we can write same amount P, it is 12,500 rupees. R, this is 12%, time period it is 3 years, and C, same time period at 10%, but here R is 10%. Here rate is 12%, but here R is 10% per annum and compounded annually. So this is compounded interest, and K is equals to, we have to take 1 because compounded annually है. Who pays more interest and by how much? तो इन दोनों में से कौन ज्यादा पे करेगा और कितने पैसे, क्योंकि इसका SI के हिसाब से और इसका CI के हिसाब से. अगर दोनों में 12% होता, टाइम पीरियड भी सेम होता और अमाउंट भी सेम होता, तो हम बिना सोचे समझे डायरेक्टली बोल सकते थे क्या, तो फबीना है उससे राधा ज्यादा पे करेगी. क्यों? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है. बट अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है और ये सिंपल इंटरेस्ट का. बट देखो सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ रेट ज्यादा है और कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट कम है, तो कैलकुलेशन पूरी की पूरी करनी ही पड़ेगी. चलो करते हैं पहले SI. अभी इंटरेस्ट ही देखना है, तो SI is equals to PRT upon 100. This calculation is for Fabina. So P is 12,500 into R, that is 12 into 3 upon 100. So 0 0 cancel out, 0 0 cancel out. So 125 into, here I can write 4. So 25 4s are 100 and 100 5s are, we can say 125 into 4. Here I am dividing this into two parts, 4 into 3. So 3 into 3 it would be 9, and this would be 1,000. 4 5s are 20, 2 carry over, 4 2s are 8 plus 2 1 carry over. So this would be 500 into 9. So it would be 500 rupees, 4,500 rupees that Fabina will pay as a interest. Now we are finding the calculation of Radha. For Radha's CI we can directly not find. First what we have to do, we have to find amount. A is equals to P in the bracket 1 plus R by 100 raised to T, and K we have to take 1, so that's why I am not writing K. 12,500, 1 plus R it is 10 by 100 raised to time period it is 3. Now simplifying this 12,500, this 0 0 would be cancelled out, so I can write 11 by 10, 11 by 10 and 11 by 10. So this 0 0 cancel out, this 0 cancel out, and 25 5s are, and this 5 2s are. So 25 into 1331, because this calculation would be 1331, and 25 divided by 2. So if I am writing this, then its calculation would be 4,862.50 rupees. This would be amount for what 17,862. Wait, this calculation I am doing again because firstly I had already done this calculation, but I forgot. This 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 1 carry over, 5 3s are 15 plus 1 16, 1 carry over, and 6 5 7 12, 1 carry over, 13 33, and divide by 2.
So 33275 divided by 2. So it would be 16. Again 166, 2 6 1 is 2, 16, 2 6 ja, again 6 ja. Now next is 2 3 are 6 and 5 is at 7.50 rupees. This will be amount A. Now I want the amount, exact amount, or 16 CI is equals to A minus P. A minus P, it is 16,637.50 rupees minus principal that is 12,500 rupees. Now if I am subtracting this 50 here, 7 minus 0 7, 3 minus 0 3, here 1, and 6 minus 2 means 4. This would be CI. Here see comparison between these two terms. Who will pay the more amount? So this amount is more compared to this, so we can write Fabina pays more than Radha, but कितना ज़्यादा तो वो देखना है. तो is equals to 4,500 minus 4137.50. तो ये माइनस करते हो तो 362.50 रुपीस. सो इतना पैसा है वो फबीना को ज़्यादा देना पड़ेगा. किसके कंपैरिजन में? तो राधा की कंपैरिजन में. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 में है आई बोरोड 12,000 रुपीज फ्रॉम जमशेद. मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया? 12,000 रुपीज. आई हैड बोरोड दिस अमाउंट फ्रॉम जमशेद at 6% per annum. So R is given 6% per annum and time period it is given simple interest for 2 years. Time period it is 2 years and I had borrowed this money at SI. अगर आगे पूछा है had I borrowed this sum at 6% per annum, अगर वही चीज मैंने R is equals to 6% per annum के हिसाब से इतना ही अमाउंट और इतने ही टाइम पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया होता एट कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट आई हैव टू पे. मतलब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से लेता तो कितना ज्यादा पैसा मुझे उसको पे करना पड़ता, दैट आई हैव टू फाइंड. सो पहले कैलकुलेशन जो अब सीआई और एसआई दोनों की कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी. तो पहले मैं एसआई की कैलकुलेशन कर लेता हूँ और बाद में सीआई की कैलकुलेशन करूँगा. So SI का formula SI is equals to PRT upon 100. So I am putting this 12,000. R is 6 into time period 2 upon 100. So this 0 cancel out. This 0 6 2s are 12. तो 12 का स्क्वायर 1440 रुपीस. इतना मुझे क्या देना पड़ेगा SI के हिसाब से इंटरेस्ट. अब यही चीज फॉर CI देख लेता हूँ. कैलकुलेशन ऑफ CI A is equals to P 1 plus R by 100 raised to time period. Here K we can take 1 because compounded annually. P it is 12,000. 1 plus R is 6 upon 100 raised to time period it is 2. So I can write 12,000 into 106 upon 100 into 106 upon 100. So this 0 cancel out. So 12 into 106 into 106. I can write like this. So if I am finding 106 into 106, then 106 is the 36 6. So it would be 11236 into multiply by 12. So 11236 into 2 6 are 12, 1 carry over 7 2 4 24 and 2 30, 1 carry over 8 4 3 1. So I can write 134,832 and divide by 10 is there, so divide by 10. So I can write 13483.20 rupees. This is the amount A I have to pay. Now A I don't want, I want CI. CI is equals to formula A minus P. So 13483.20 minus initially I have 12,000 rupees. So I can write 1483.20 rupees. Now compare these two terms. Here I am paying 1,440 rupees and here 1,483.20 rupees. So I have to pay
1483.20 minus 1440 is equals to 43.20 rupees extra if I had borrowed this money at compounded interest. If I had taken this money as compound interest, then I have to pay 43.20 rupees extra.